અંકલેશ્વર ઓએનજીસી દ્વારા કલોની ખાતે 75મા પ્રજાસત્તાક દિનની દબદબાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। દેશના 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે અંકલેશ્વર ઓએનજીસી દ્વારા 26 જાન્યુઆરી સવારે 8:30 કલાકે કલોનીના હેલીપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ઓએનજીસીના એસેટ મેનેજર વિજયકુમાર ગોખલેના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। આ અવસરે સીઆઈએસએફ, ઓએનજીસીની સિક્યુરિટી, ઓએનજીસીના ફાયર તેમજ ટેરિટોરિયલ આર્મીના જવાનો દ્વારા પરેડ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં એસેટ મેનેજર વિજયકુમાર ગોખલેના હસ્તે જવાનોની પરેડ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી પ્રસંગે મહિલા સમિતિની શ્રીમતી અંજલિ ગોખલે તથા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 75 वर्षों में गणतंत्र के रूप में हमने बहुत प्रगति की है और हमें अभी बहुत से फैसले तय करने बाकी हैं। तेल और गैस की आत्मनिर्भरता के संदर्भ में ओएनजीसी कार्य सदा से करती रही है और आगे भी हमारा कमिटमेंट है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने कार्यों में अपना सतत योगदान करते रहेंगे। अपने अदम्य प्रयासों की वजह से ही हम आज देश के एक बड़े भाग को तेल एवं गैस की पूर्ति करने में सक्षम हैं और बदलते हुए परिवेश में, जिसमें कि हमें क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखना है, हम ग्रीनर एनर्जी रिसोर्स के बारे में करने के लिए भी पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। हम आगे देश की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे और साथ ही साथ अपने सीएसआर के छोटे प्रयासों के जरिए अपने आसपास के सभी गांवों में और समाज के विभिन्न वर्गों को ऊपर लाने में भी अपना योगदान देते रहेंगे। एक बार पुनः सभी देशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।